Assalamualaikum class. Today we're going to discuss about the topic of survey. While doing any kind of research or a project, we have to collect data and gather information about that particular relevant project. Okay. For this, we collect data and gather information. Okay, this data can be collected by either by different types of questionnaires, or you can. ये आपकी बात सही नहीं आ रही। Okay. अब आ रही है सब आपको? सही आ रही है। Now is it clear? clear है. Okay. Yes, ma'am. So, आपकी आवाज am I clear to मैम बीच everyone? में अटकती है आपकी आवाज. अटक रही है, अब ठीक है? यस मैम आप ठीक है. Clear. अच्छा. Okay. This type of data we can collect either through questionnaires or we can do the direct interviews with the individuals. Okay. This type of taking data or collecting data is called as survey. A survey is an investigation in which formation is systematically collected, but without any practical experimental method is used. All right. Surveys are methods for collecting data, analyzing them, and then evaluating them in order to determine the amount of disease problems in a community, and also to identify the cases that have not been identified yet. The advantages can be, we can, with the help of surveys, we can calculate rates and indices. We can, it can also provide us information on on some of the aspects of oral health about which information may not be available from any source. Okay. It can, we can also associate and correlate different studies with the surveys and identify them. It can be the reason for utilization as well as non-utilization, or oral health services can be studied. Information collected from this mean is more systematic and reliable and complete as compared to the information collected routinely. Okay. There are basically types of investigations are surveys, and survey can be divided into two types, okay? Descriptive type and analytical type. In descriptive type, it mainly describes the thing or the event exists. This is a type of non-research, okay? And it is designed to describe new meaning and new knowledge where there is very little known about the phenomena. Yeah. Okay, the descriptive type, for example, in your class, there are 50 students, all right? And among 50, 35% of the students are male, and rest of the class, like 75% is female, okay? So I just only describe this thing, okay? So this is called as descriptive study, while the analytical study is opposite to this. I will do the मैं इस इंफॉर्मेशन को जो है स्टैटिस्टिकल टेस्ट वगैरह यूज करके एनालाइज करूंगी. ठीक है, मैंने सिर्फ ये नहीं देखना कि डिस्क्राइब नहीं कर देना, उसके बाद मैंने इसको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाइंग ऑन दिस. So a descriptive survey attempts to picture or document current conditions or attitudes, that is to describe what exists at the moment. Okay, it can be divided into cross-sectional. We can do this by cross-sectional or longitudinal. Cross-sectional is a single time study. It is also called as a snapshot of a population. Okay? For example, I am doing a research, or just a minute. I am doing a research on Russian teeth. ठीक है, toothbrushing. अब मैं किसी पॉपुलेशन में जाती हूँ, सपोज आई एम गोइंग टू अ स्कूल, और उस स्कूल की पॉपुलेशन में मैंने
आवाज क्लियर है आपको? जी मैं आपकी आवाज ना बैकग्राउंड में चली जाती है थोड़ी देर बाद। अच्छा सॉरी, वो माइक पीछे चला जाता है। ओके, अब मैंने स्कूल की पॉपुलेशन में देखना है कि मैंने एक सर्वे किया जिसमें मैंने देखा कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो मई के मंथ, सपोज इन द मंथ ऑफ मई, कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो टूथब्रशिंग कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने उसके अकॉर्डिंगली एक डाटा लिया और उसको उसके रिजल्ट्स निकाल दिए, ठीक है। मैंने एक सिंगल टाइम पे डाटा लिया है, ठीक है, इन द मंथ ऑफ मई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, इसमें मैंने टाइम टू टाइम जाकर डाटा लिया है। अब मैं गई हूँ स्कूल में, आए पहले मैंने उनसे उनको टूथब्रशिंग टेक्निक पे उनकी टूथब्रशिंग पे डाटा ले लिया। उसके बाद देन आई एजुकेट देम एंड गिवन द लेक्चर ऑन टूथब्रशिंग टेक्निक्स, ठीक है। इसके बाद मैंने उनको दोबारा उनकी टूथब्रशिंग टेक्निक पे देखा, उनसे करवाई कि उनको कितनी नॉलेज आई है आफ्टर माय लेक्चर, आफ्टर गिविंग माय लेक्चर, ठीक है। तो मैंने डिफरेंट टाइम टू टाइम लिए हैं, तो इसको करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी टेक्स अ स्नैपशॉट ऑफ अ पॉपुलेशन एट अ सर्टेन टाइम, allowing conclusions about phenomena across a wide population to be drawn. For example, teenagers views on cigarette smoking as a month of May 2010. While in longitudinal study, we use time as the main variable and tries to make an in-depth study of how a small changes and fluctuation can prove it, can fluctuate over the time. जैसे कि मैंने एनालिटिकल का बताया था, इट्स एन एक्सप्लेनेटरी स्टडी, ठीक है। इट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाई द सर्टेन थिंग्स एग्जिस्ट, व्हाई इट हैपेंस, while in descriptive it is described as who, what and when and where it happens, and determines and describes the way of the things happens, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में हम ये सब कुछ करते हैं, while in analytical we simply give the answer why certain situations exist, why this is happening, ठीक है। Here we examine two or more variables to test our research hypothesis. For example, how cycles affects the टीवी व्यूइंग हैबिट्स। इसमें आपकी लाइफ साइकिल आ रही है और दूसरी आ रही है आपके टीवी व्यूइंग हैबिट्स, ठीक है। इसमें भी दोनों मेथड हम यूज कर सकते हैं, आइदर थ्रू द क्रॉस सेक्शनल और थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल। हमजा? यस मैम। हाँ जी, कैन यू एक्सप्लेन क्रॉस सेक्शनल स्टडी इन योर ओन वर्ड्स? मैम क्रॉस सेक्शनल के अंदर हम बेसिकली लॉन्ग टर्म एक सर्वे करते हैं जिसके अंदर हम जो मुख्तलिफ एरियाज हैं उनसे अपनी डिटेल्स को इंड्यूस करते हैं, जो भी हमने सर्वे किया है, यानी कि हम ब्रॉडर स्टडी करते हैं उसके अंदर। और टाइम का क्या करेंगे हम? लॉन्गिट्यूडनल इज अ लॉन्ग टाइम स्टडी ना। यस मैम। अच्छा, बेसिक ओरल हेल्थ सर्वे। Surveys are used to collect the basic information about oral disease status, treatment needs, and that is needed for planning or monitoring oral health care programs. So objectives are, initially it provides us with the full picture, with the full needs of the population, what they require, what they demand for, what kind of treatment needs are required for, and what is the desire of the population of oral health status. Okay? It is used to monitor changes in disease level or patterns. It usually monitors the pattern of a disease. In this way, it is possible to assess the appropriateness and effectiveness of the services being provided. What kind of services we are providing are beneficial for them, for the community, or are they effectiveness, what is their effectiveness, ठीक है। हमने इन सबको evaluate करना है, and to plan or replan oral care services and training programs are needed. These are the objectives of survey. So before surveying any oral disease, these are the certain points or the characteristics which which an oral disease must have.
that disease are strongly age related. For example, some disease are mostly affiliated with younger ages. They can affect the younger people more as compared to the older, okay, and vice versa. A relatively high percentage of the population must be affected. The population which are going to study, which we going to study, must be affected with the high percentage of the. Okay. One of the dental disease, dental caries, is irreversible, and thus information on current status provides data on not only on the amount of disease present, but also on the previous disease experience. There is a clear pattern of increase in disease severity with increase in prevalence. पहले तो मुझे ये बताएं what is prevalence? प्रेवलेंस हाँ, प्रेवलेंस मैम prevalence इंसिडेंस ऑफ डिजीज कितनी दफा वो आती है एक पॉपुलेशन के अंदर is a proportion of population who has a specific characteristic. Yes, ma'am. ठीक है? There is a specific disease. ठीक है? These common oral disease exist in all populations, varying only in intensity and prevalence. ये जो कॉमन डिजीज है ये तमाम पॉपुलेशन जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए. इसकी वेरिलेंसी इसकी इंटेंसिटी या प्रेवलेंस फ्लक्चुएट कर सकती है. बाकी जो है ये डिजीज मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल पॉपुलेशन. There is extensive documentation or variation of profiles of dental caries for population groups with different economic levels and environmental conditions. Many observations are made in standard measurements for each subject, that is, for each tooth in caries and for the next sextents of the mouth in the assessment of the periodontal. Now, their tooth pathfinder survey. It is a practical, economic, and survey sampling methodology. Okay, the method need is a stratified cluster sampling technique. There are two types of sampling techniques. One is stratified, and the other one is stratified cluster sampling technique. In stratified sampling technique, we collect data from from different clusters of the strata. Okay, while in cluster sampling technique we collect data from the specified cluster. जो जिस cluster को हमने करना है उसको हमने पूरे सिलेक्टेड क्लस्टर से हमने सैंपल लेना है. और इसमें स्ट्रेटिफाइड में रैंडमली हम कहीं से भी स्ट्रेटा में से कलेक्ट कर लेंगे सैंपल. ठीक है, which aims to include and this pathfinder survey aims to include the most important population subgroups like to having differing disease in specific index age groups, and clinically relevant information for planning is obtained at minimum expense. The methodology is suitable for obtaining the following formation. That is, we can get prevalence of the various oral diseases affecting the population. Important variation in disease levels, its severity and need for treatment in subgroups of the population can be identified by this survey. A picture of age profiles of oral disease in the population to provide information about severity and progression of disease and to give an indication as to whether the levels are increasing or decreasing. The Pathfinder survey is classified as the pilot and the national survey. Pilot survey includes only the most important subgroup in the population and only one or two index ages, usually 12 years are the most important, and the other age group can be included. It provides information. It provides a minimum amount of data needed to commence planning, to start the plan. While the National Pathfinder Survey incorporates sufficient examination sites to cover all the important groups. इसमें पायलट सर्वे में हमने सिर्फ एक इम्पोर्टेंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब ग्रुप हमने चूज किया था. ठीक है, विद 1 और 2 इंडेक्स एजेस. यूजुअली 12 इयर्स एज को हम लेते हैं और अगर इसके साथ कोई और लेना हो तो ले लेंगे. ठीक है, while in the National Pathfinder Survey we incorporate sufficient examination tools
साइट कवरिंग ऑल द इम्पोर्टेंट सब ग्रुप्स. हमने इसमें जो भी इम्पोर्टेंट सब ग्रुप्स हैं हम सबको लेना है, एंड विद एटलीस्ट 3 of the index ages are included. Suitable for the collection of data, for the planning and monitoring of services. उसमें हमने वो commencement of the planning था, ठीक है. While this is suitable for data collection, planning and monitoring services in all the countries. ठीक है. इंडेक्स एजेस एंड एज ग्रुप्स को हम कर लेंगे. प्राइमरी टीथ में 5 years की एज में प्राइमरी टीथ आ जाते हैं, ठीक है. परमानेंट टीथ में हम ले लेंगे 12 years, 15 years, 35 to 44 years, 65 to 74 years of age, ठीक है. मिनिमम ग्रुप 25 to 50 सब्जेक्ट्स होने चाहिए. इसमें हमने जो ग्रुप आपने बनाना है वो एटलीस्ट 25 to 50 के दरमियान में होना चाहिए. 5 years level of caries in primary dentition. क्योंकि 5 साल की उम्र तक प्राइमरी डेंटिशन आपकी पूरी होती है, तो उसमें जो है हमारे लिए इजी है ये. 12 years में children leave primary school at this age. All permanent molars are erupted except the third molar. It is chosen as the global monitoring age for caries for international comparison and monitoring of disease trends. 15 years. Permanent molars are exposed to oral environment for about 3 to 9 years. ठीक है. 3 से 9 साल पहले ही जो है परमानेंट के दरमियान जैसे अरसा है जिसमें परमानेंट मोलर्स आपको होता है. Therefore, assessment more meaningful than 12 years. Also important for assessment of perio disease indicators in adolescents. 35 to 40 years की एज में स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग ग्रुप फॉर हेल्थ कंडीशन ऑफ एडल्ट. हमें एडल्ट की हेल्थ कंडीशन का भी पता चल जाता है. मॉनिटर डेंटल caries, perio involvement and general effects of care provided. 65 to 75 years of age. Gained importance recently, age distribution and increased lifespan. Data needed both for planning appropriate care for the elderly and for monitoring overall effects of oral care services in elderly patients is examined. Any questions? Hello? No, ma'am. Okay. समझ आ गई है सबको? बच्चों समझ आ गई है? आवाज आ रही है? यस मैम. समझ आ गई है सारा? हाँ जी मैम. Yes, ma'am.